Hello everyone. Good evening to all of you. Is audible, visible, all clear? वर्षा भल अच्छी मु ना पूरा गोटे करंट अफेयर टॉपिक को आनी के आज हम आसीचे करंट अफेयर रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करबा इकोनॉमिक सर्वे ना इकोनॉमिक सर्वे आज आसीची इकोनॉमिक सर्वे ऊपर डिस्कशन करे ना इकोनॉमिक्स रो ट्रेडिशनल पार्ट तो हम डिस्कशन करूचे ट्रेडिशनल जिंस तो हम समस्त पढुचे बहुत दिन दीर्घ दिन धरि की क्लास करि चलचे स्टैटिक पार्ट आज गोटे डायनामिक पार्ट ऊपर डिस्कशन करबा जोटा आज रो टॉपिक पूरा बर्निंग इश्यू इकोनॉमिक सर्वे ऊपर आज डिस्कस करें ना फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे कौन एंड हु पब्लिशेस दिस सर्वे इकोनॉमिक सर्वे कौन एंड हु पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे किए पब्लिश करा दिस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपोर्टेंट डाटा कहि भी परीक्षा पई जहां इंपोर्टेंट से सब डिस्कस करिवे याकू यूज कोड करि परिबे इकोनॉमिक सर्वे को यूज कोड करिवे ना इकोनॉमिक सर्वे को फर्स्ट यूज प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसे पारे मेंस आंसर राइटिंग जते बेले करूछन्ते आंसर राइटिंग रे मध्ये लिखि परिबे मु कहि जीएस पेपर 3 रो ऑथेंटिकेटेड डाटा यूज करियो कहितली एंड ऑथेंटिकेटेड डाटा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा जीएस 3 पई आसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो मोस्ट ऑफ द डाटा यू कैन टेक फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट ऑफ द डाटा यू कैन टेक फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ठीक अछि ओके तले इकोनॉमिक सर्वे इट इज अ एनुअल डॉक्यूमेंट हु प्रोड्यूसेस और हु पब्लिशेस इट दिस प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. So it is all about the economic performance over the past year. Last year रा economic performance इतरे देखा जाए इतरे दीटा important point देखा जाए कौन ना प्रथम कथा ला last year रा performance economy रा last year performance देखा जाए plus coming year रा performance को मध्य measure करा जाए plus कौन कहली last year रा performance plus coming year रा performance को इटी measure करा जाए था है so this is the basic objective of economic survey. Then what are the key components of economic survey key component kon the macroeconomic performance macroeconomic performance bhitar kon asuchi now you are talking about the whole of the indian economy रे gdp growth rate kete inflation rate kete fiscal deficit kete achi trade balance kon pura the entire health of the economy you will come to know that is the macroeconomic performance. Sectoral analysis every sector primary sector secondary sector tertiary वा service sector सेमानकर परफॉर्मेंस लेवल कोन गवर्नमेंट पॉलिसीज कोन आसला रिफॉर्म कोन आसला व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फ्यूचर पॉलिसी पई कोन अछि एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट रा कंडीशन कोन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते अछि एम्प्लॉयमेंट रेट केते अछि अनएम्प्लॉयमेंट रेट केते अछि बिकॉज़ ये डाटा को नेला परे यू कैन चेक द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रा करंट हेल्थ कोन वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट वेदर इट इज ग्रोइंग एट अ स्टैग्नेंट रेट और वेरी मॉडरेट लो रेट ऑफ ग्रोथ ये सब गुडा कटी देखा जाए. Fiscal policy means budget. दी प्रकार policy गोटेला monetary policy गोटेला fiscal policy. So monetary policy is published by RBI. Monetary policy रे देखा जाए the liquidity in the market. Market रे केते टंका रहइबो. What is the quantity of money in the market that is decided by monetary policy. Monetary policy is formulated by RBI. Whereas fiscal policy is by the Ministry of Finance, Government of India. Fiscal policy is nothing but the budget. Fiscal policy is all about the revenue and revenue as well as the expenditure of the government. गवर्नमेंट रो रेवेन्यू केते एक्सपेंडिचर केते फिस्कल पॉलिसी रे देखा जाय बा बजट रे देखा जाय इकोनॉमिक सर्वे रे कोन देखा जाय इकोनॉमिक सर्वे रे यू कैन चेक द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रो परफॉर्मेंस रेट कोन अछि बुझेला वर्षा क्लियर मॉनेटरी पॉलिसी कोन मॉनेटरी पॉलिसी रे देखुचंदी मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय आरबीआई नाउ ये सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां कहूच मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई सेठी देखा जाय क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट व्हाट शुड बी द लिक्विडिटी परफेक्ट लिक्विडिटी केते अधिक मनी अछि RBI will absorb it. कम money अच्छी RBI will inject money to the market. Now this is the structure. एमिति हुए. So आउ कौन देखुचंदी एटी इकोनॉमिक सर्वे रे इकोनॉमिक सर्वे रे एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट रा कंडीशन सोशल इंडिकेटर्स सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी इराडिकेशन malnutrition hunger related statistics ये सब पाइबे. Global economic context. This is a comparative analysis of Indian economy with the major performing economies of the world. World रा major performing economy सहित comparison करि परिबे impact बा इंटरनेशनल इवेंट जदी अछि किछि इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक रशिया यूक्रेन वार नाउ यू कैन टॉक अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइनियन कॉन्फ्लिक्ट इन द गाजा स्ट्राइप सो गाजा स्ट्राइप रे रैपिड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरी स्टैग्नेंट और लो ग्रोथ रेट नो इकोनॉमिक ग्रोथ नो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नो हेल्थ केयर फैसिलिटी नो एजुकेशन पॉवर्टी malnutrition हंगर ये सब देखिया मिलछि गाजा स्ट्राइप रे बिकॉज़ ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइनियन कॉन्फ्लिक्ट सो ये कॉन्फ्लिक्ट रो इंपैक्ट कोन इंडियन इकोनॉमी ऊपर रशिया यूक्रेन वार रे इंपैक्ट कोन इंडियन इकोनॉमी ऊपर
बा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो गुडा देखुछन ये सब इंपैक्ट कौन केमती पड़छि ये सब हमें चेक करि परिबा ना इकोनॉमिक्स सर्वर इंपोर्टेंस ताल कौन व्हाट इज द इंपोर्टेंस होछि पॉलिसी फॉर्मुलेशन पाई दरकार ट्रांसपेरेंसी पाई दरकार इन्वेस्टर मानकर कॉन्फिडेंस बढ़िया दरकार हु इज द इन्वेस्टर इंटरनल इन्वेस्टर as well as the external investment through FDI foreign direct investment FII एगुडा केमती डेवलप करि परिबा सो अनलेस इन्वेस्टमेंट इज मोर जे पर्यंत इन्वेस्टमेंट बढ़ी नाही से पर्यंत आमे ग्रोथ रेट को बढ़ाई परिबानी बिकॉज जेगुडा को बड़ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दे नीड मोर ग्रोथ रेट से सेक्टर गुडा को कोन दरकार दो सेक्टर्स दे नीड मोर ग्रोथ रेट है ना सो इकोनॉमिक प्लानिंग को वे रे प्लान करबा को सेक्टर पई केमती प्लान आसीबो ये सब देखु जे बुझियला व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ कम टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इट वाज टेबल्ड टुडे आज आसीची किया एंड की हु टेबल्स इट इट इज टेबल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इट इज टेबल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एठी जदि हमें देखिबा ग्रोथ रेसिलिएंट अछि बट रिस्क इज हाई जियोपॉलिटिक्स ट्रेड फ्रैगमेंटेशन कोन पई हैला जियोपॉलिटिकल इश्यूज गुडा कहली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आर इंक्रीजिंग नाउ इट इज इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कथा कहली रशियन यूक्रेन वार कथा कहली हैला सो कॉन्फ्लिक्ट गुडा को बढ़ौची वर्तमान ईरान कंडीशन समस्त जानथि वर्तमान ईरान सो मिडिल ईस्ट इश्यूज इन मिडिल ईस्ट ये सब कारणरू ये सब इंपैक्ट पड़छ कहा पर ये सब इंपैक्ट पड़छ ऑन द इंडियन इकोनॉमी ट्रेड फ्रैगमेंटेशन यूएसए तार ट्रेड रेट गुडा सब बढ़ई चलची ट्रेड जो टैरिफ रेट गुडा बढ़ई चलची से रिसेंटली इंडिया साइंड अ वेरी लैंडमार्क डील विथ यूके सहित इंडिया लैंडमार्क डील आउ के करंट अफेयर रे कहबी 2007 रु इंडिया चेष्टा करी आस्तला टू साइन दिस डील एंड नाउ यूके सहित इंडिया गोटे लैंडमार्क डील साइन करिछि जोथरे हम एक्सपोर्ट करबा इंडिया रो जो प्रोडक्ट गुडा परे एडवांटेजेस अच्छी जो प्रोडक्ट गुड़ाक इंडिया रे अधिक प्रोड्यूस होउचंदी से गुड़ाक आमे यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करबा एवं यूरोपियन यूनियन रु आमे आनिबा इंडिया को से प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट गुड़ाक वैल्यू अधिक माने टैक्स रेट कमी जीवो जो कार मनकर 100% टैक्स रेट लागुतला गोटे कार ऊपर इंपोर्टेड कार 50 लाख टंकार कार हेले 50 लाख टंका टैक्स कोटी टंका पड़ुतला से कार रेट कमी जाई 60-70 लाख रे मिलियो इंडिया रे तो लग्जरियस प्रोडक्ट गुड़ाक व्हाटएवर वी आर importing from European Union, now it will be reduced. Yes or no? Yes or no? Now India will be open to a big market, big European market. India will be opened up. आमे open up होइबा European market सेठी अधिक इन्वेस्टमेंट करिबा प्लस यूरोप रु सेही प्रोडक्ट गुडा को इंडिया कनिया जोटी हम कम रेट रे पाइबा ना देखो वेरी हिस्टोरिक एंड लैंडमार्क डील 2007 रु इंडिया चेष्टा करसला फाइनली इंडिया साइन दिस डील बुझेला कि नहीं इज दिस क्लियर तो ट्रेड फ्रैगमेंटेशन देखियो मिलु सो फाइनेंशियल ईयर 2026 रियल जीडीपी ग्रोथ इज 7.4% जीवीए ग्रोथ इज 7.3% मन रखिबे डाटा सब दरकार प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रेंथेन बढ़ी ग्रोइंग टू 7% 61.5% ऑफ जीडीपी 2012 परथु फर्स्ट टाइम पे प्राइवेट कंजम्पशन इज हाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाटा 2012 परथु कोन कहली प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रेंथेन 2012 परथु एटा फर्स्ट टाइम पे हाई 61.5% ऑफ जीडीपी बुझी पड़न जीडीपी रो 60 भाग रु अधिक हलानी then low inflation stable employment rate so जेतले इन्फ्लेशन रेट कमी जीवो प्राइस हाइक कमी जीवो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट रेट आसी जीवो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रियल परचेजिंग पावर विल बी इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर बढ़ी जीवो कंजम्पशन इन्फ्लेशन कम रहिला एम्प्लॉयमेंट रहिला सो डिमांड बढ़िबो काहे कि डिमांड बढ़िला बिकॉज़ आई हैव द परचेजिंग पावर आई कैन अफोर्ड अ प्रोडक्ट मते पैसा मिली गला एम्प्लॉयमेंट मिली गला तो पैसा मिली गला प्राइस भी कम रहिला प्रोडक्ट रो तो मु अफोर्ड करि परिबी तो किनिबी सो इन्वेस्टमेंट बढ़िबो बा कंजम्पशन रूरल कंजम्पशन एवं अर्बन कंजम्पशन इट इंक्रीज हैला बुझिला ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बढ़िला सर्विस नाउ व्हाट इज द व्हिच सेक्टर डिराइव्स ग्रोथ हियर इंडियन इकोनॉमी रे व्हाट इज द ग्रोथ पोटेंशियल को सेक्टर पकरे अछि व्हिच सेक्टर हैज द ग्रोथ पोटेंशियल दिस इज द सर्विस सेक्टर डिराइव्स ग्रोथ 9% of GVA expansion and all. तो GDP growth rate ये देखिए पड़ती हो समझ 2022 23 23 24 24 25 25 26 26 27 इधर 25 26 26 27 26 27 देखिए तो 6.8 to 7.2 25 26 7.4 24 25 था 6.5 हैला ना पर कैपिटा नेशनल इनकम देखो एटी 2025 26 पई 2.2 लाख कहते 2.2 लाख 2025 26 पई
25-26 पे एटा इंक्रीज होउची केते देख परथियो समस्त नाउ एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक फॉरेस्ट्री फिशिंग एटा केते 2024-25 रे 4.6 थला एबे एटा 3.1 हो जाईची 3.1 रिड्यूस्ड इंडस्ट्री 2024-25 थला 5.9 it is 6.2 now service sector it shows a very good growth rate now 7.2 थला केते हिथिना 9.1 देख परथियो समस्त केते हिथि 9.1 fiscal deficit reduced देख परथियो fiscal deficit reduced to 4.8 और fiscal deficit जते कमियो सेते बेटर fiscal deficit reduced okay next ताले फिस्कल मैनेजमेंट रे कोन कोन डेवलपमेंट हमकु देखिया को मिली छी कोन कहली फिस्कल मैनेजमेंट रे हमकु कोन कोन डेवलपमेंट देखिया को मिली छी सबटु इंपोर्टेंट पॉइंट हमकु देखिया को मिली छी इंडिया रो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डेवलप होई छी दा जोडा कॉन्फिडेंस बूस्ट होई छी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जोटा हम देखते एम्प्लॉयमेंट रेट जोटा हम देखते इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो जाई छी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी जाई छी कंजप्शन बढ़ी जाई छी प्राइस कमी जाई छी ये सब पॉजिटिव पॉइंट इंडियन इकोनॉमी पई मुझे ये सब पॉजिटिव पॉइंट रेवेन्यू रिसीट इंप्रूव्ड 9.2% of GDP in financial year 25 up from 8.5% in 6 to 20 now जदी 16 to 20 एवरेज देखिबा हमें रेवेन्यू रिसीट थिला 8.5 एटा इंक्रीज हेकी केतला ना 9.2 ना बहुत इंपोर्टेंट डाटा है आको लिखिया पड़ियो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड 2.4% to 3.3% को इंक्रीज हेची डायरेक्ट टैक्स बेस एक्सपैंडेड direct tax base expanded increased from 6.9 crore to 9.2 crore technology adoption increased tax administration and now tax administration is a very complex complicated process जोथरे technology adoption बढ़ी छि technology बढ़ी छि EUA bill volume increased to 21% so these are important data related to fiscal developments now GST भी देखंदो एटी GST लाख crore 2021-22 रे 14.9 लाख crore 2021-22 रो कथा कहूची 22-23-18 2023-24 20 24-25 22.1 now 2025-26 एटा अप्रैल टू डिसेंबर पर्यंत ये डाटा नि आइची अप्रैल टू डिसेंबर 17.4 लाख करोड़ GST कलेक्शन now indirect tax collection देख परथु एट समस्त GST is an indirect tax केते अछि indirect tax collection केते अछि 17.4% 17.4% last year it was 22.1% ठीक अछि now capital expenditure central government रे increase h from 2.7% of GDP to 3.9% of post pandemic and 4% in financial year 25 now state capital investment support incentivized जोटा को SASCI कहूचे एटा मध्ये increase h 2.4% of GDP बुझिला recent fiscal pressure emerged state deficit केते ना 3.2% of GDP 3.2% of GDP ये वाला फिस्कल रिलेटेड एफडीआई डेफिनेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेनर माने जोटा जो इन्वेस्टमेंट करछन तार बेसिक क्लास म आनी डोंट वरी बेसिक क्लास त हम डिस्कस करले सरीबनी काना वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी होल इकोनॉमी ऊपर हम डिस्कशन करूचे एठी तो पूरा तो सब बेसिक कांसेप्ट कहि परिबिनी टाइम होबनी बट डोंट वरी हम आनी बसे क्लास आनीबा हम बेसिक क्लास रे वी विल डिस्कस अबाउट एफडीआई एंड ऑल ओके then monetary management and financial intermediation now जदि हम देखिबा financial year 26 strong resilience was there policy stability bank asset quality improved means NPA reduced कोन कहली NPA non performing asset ता तो reduce हे जिवो हमें कहि परिया बैंक रा asset quality asset कोन what generates income for bank is asset now what generates income for bank काली रा क्लास रे पढैतिली that is the loan generation loan रो quality improve means what means repayment increased जो repayment गुडा को बंद हो जाउथिला repayment हो नथिला now repayment started so gross net performing asset sorry gross non performing asset जोडा NPA कहूचे NPA is reducing NPA value is reducing net NPA is 0.5% credit growth accelerated to 14% strong lending momentum लेंडिंग बढ़ुची लेंडिंग बढ़िले लिक्विडिटी बढ़िले डिमांड बढ़िले सप्लाई बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी बढ़िबो सिंपल देखो केते सिंपल दिन कोन कहली क्रेडिट बढ़िले हाउ क्रेडिट लीड्स टू अ पॉजिटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी रे क्रेडिट केमती गोटे पॉजिटिव ग्रोथ क्रिएट करूची
क्रेडिट बढ़िले कौन कहली डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बा सप्लाई बढ़िबो सप्लाई बा प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी बढ़िबो नॉट देयर आर सम टारगेटेड क्रेडिट स्कीम्स जोडी टारगेट अछि क्रेडिट में कोन ना स्कीम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया पीएम स्वनिधि पीएमएमवाई मुद्रा योजना जोडा कहूछ मुद्रा लोन क्रॉस 30 लाख 36 लाख करोड़ जोटी तुम देखुलो किशोर तरुण स्कीम गुडा कोन थिला मुद्रा रे ना मुद्रा योजना इंक्रीज होउची देखो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड डीमैट अकाउंट एक्सीड्स 21.6 crore women and non metro investors increased widening financial inclusion म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बेस रीच 5.9 crore म्यूचुअल फंड बढ़िले एटा सब बढ़िले इन्वेस्टमेंट बढ़िले कोन बेनिफिट हबरे व्हाट इज द बेनिफिट इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस हां इन्वेस्टमेंट बढ़िले हमको बेनिफिट कोन मिलियो इन्वेस्टमेंट बढ़िले इकोनॉमी ग्रो करिवो कोन हो इन्वेस्टमेंट बढ़िले इकोनॉमी ग्रो करिवो ठीक अछि ओके देन एक्सटर्नल सेक्टर कथा देखिबा एक्सटर्नल सेक्टर दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दिस सेक्टर इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडिया रा ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर रोज शार्पली merchandise exports from 1% to 1.8% सर्विस सेक्टर भी ग्रो करिछि फ्रॉम 2% to 4.3% मन रखिए 2% to 4.3 ना ग्लोबल साउथ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ने एटा किते रैंक थर्ड रैंक आसी इंडिया टोटल एक्सपोर्ट record USD 825.3 billion in financial year 25 growing at a rate of 6.1%. Non-petroleum exports reached USD 374.3 billion. Service export USD 387.6 billion. Current account deficit is moderate. Yes, investor will get money. Very good point for further investment. Foreign exchange reserve USD 701.4 billion. 701.4 billion. Then it is increasing at a high rate. FDI inflow बढ़ुच 64.7 USD billion. केते FDI inflow USD 64.7 billion. हला greenfield investment बढ़ुच. Digital investment destination बढ़ुच. तो ये गला external sector ना forex देख पारथुए forex टा केमति बढ़ुच foreign exchange reserve it is 701.4 पे पहुंच लेना US billion dollar. एतिकी USD 701 USD. केते 701 USD आछे एटा पहुंच लेना. Okay. Now investor confidence is important for us or not? Next one. Investor confidence is important for us or not? Investor confidence कौन? Investor confidence is important for us or not? Yes, it is important. Yes, it is. Now investor confidence बढ़िले हमर benefit कौन हो के कहबे? Now investment बढ़ियो. Investor confidence बढ़िले कौन हो? ना investment बढ़ियो. Investment in India will increase. So एटी देखो ए टाइम पीरियड भीतर इन्वेस्टमेंट गुडा बढ़ु 64.7 बिलियन डॉलर एफडीआई अप्रैल नवंबर 2025 भीतर ए 6 मास भीतर 64.7 बिलियन यूएसडी. इन्फ्लेशन को आसीबा इन्फ्लेशन लोएस्ट सीपीआई इन्फ्लेशन केबेटू जदि हम देखिए अप्रैल डिसेंबर 2025 एवरेज इन्फ्लेशन इज ओनली 1.7% केते ओनली 1.7%. Good average inflation is only 1 point. Now the very low. Now inflation moderation it was driven mainly by declining food and fuel price. E price would come food price or fuel price from 52.7% of CPI basket. The reduce a price. Hela sharpest inflation decline. Sharpest inflation decline. Then as we agriculture and food management. Agriculture and food management को आसीबा
now livestock sector grow karichi GVA rise करछि 1.95%, gross value added increase ହେଇछि livestock sector कोन कहली livestock sector is growing, fisheries output increased over 140%, food grain production reached 3577.3 LMT, food grain production increased, growth is driven by what are the productions cocoa production बढ़िला ना rice wheat maize production बढ़िछि, coard cereals production बढ़िछि कोन कहली rice wheat maize production increased है तो ऑटोमेटिकली यार एक्सपोर्ट गुडा को मध्य बढ़िबो, इंडिया इज अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ मेज आल्सो, मक्का हमें एक्सपोर्ट करि थाउ मध्य बेटर क्वालिटी हैला। मेंस 31st टू स्टार्ट अछि, ठीक अछि स्टार्ट हेले भी मेंस रे भी ए डाटा गुडा को सब लिखि परिबे, मेंस रे ए डाटा गुडा को सब लिखि परिबे, ठीक अछि। ना हॉर्टिकल्चर इज द की ग्रोथ ड्राइवर, हॉर्टिकल्चर कोन गिरी, हॉर्टिकल्चर कोन, हॉर्टिकल्चर ग्रोथ ड्राइवर बनि बर्तन 362 एमटी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अधिक, देन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ुची, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ुची कोन कहली गवर्नमेंट बर्तन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करूची, फार्मर्स इनकम सपोर्ट, फार्मर मानको इनकम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस माध्यम रे पीएम किसान योजना माध्यम रे करा जाय, ओडिसा रे थिला तुमर जोटा कोन कालिया योजना नथिला, सो पीएम किसान हे गला बा पीएम केएमवाई हे गला, ए या माध्यम रे कोन होतिना ऑगमेंटेशन ऑफ फार्मर इनकम को इंक्रीज करा जाउची, कोन कहले ऑगमेंटेशन ऑफ फार्मर इनकम होची बुझियला ना। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इट समस्त देखि परथु ग्राफ रु फूड ग्रेन प्रोडक्शन केमदी इंक्रीज हिच इन मिलियन टन्स 357.7 मिलियन टन्स, 2015-16 रे 251 थिला, 2025-26 रे 357, देखो केते बढ़िलानी माने पाखो कि 106 मिलियन टन इंक्रीज्ड माने 40% रु अधिक बढ़िलानी इन लास्ट 10 इयर्स, देख परजन समस्त लास्ट 10 इयर्स रे इंक्रीज समस्त देख परथु एटी, लास्ट 10 इयर्स रे इंक्रीज 40% मोर देन 40% इंक्रीज्ड 2024-25। एबे आसी हमें सर्विस सेक्टर, फूड सेक्टर गला ओवरऑल आईडिया आसी गला फूड सेक्टर ऊपर, फूड ग्रेन्स ऊपर, तापर आसी हमें सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर इंडिया रा ग्रोथ ड्राइवर कि नहीं, सर्विस सेक्टर इंडिया रा ग्रोथ ड्राइवर कि नहीं, यस यस सर्विस सेक्टर इज द ग्रोथ ड्राइवर। सो सर्विस सेक्टर रा शेयर इंक्रीज हिट केते 53 रु टू इट इज रोज टू 53.6% ऑफ जीडीपी, इट रिकॉर्ड 56.4% ऑफ जीबीए हैला। नाउ ग्लोबल सर्विस ट्रेड इंक्रीज डबल्ड फ्रॉम 2% टू 4.3%, 2005 रे थिला 2% ग्लोबल सर्विस ट्रेड, एबे सेटा इंक्रीज हेकी केते गेला ना 4.3%, डबल रु अधिक हेला। एफडीआई शेयर इंक्रीज फ्रॉम 77.7% प्री पैंडेमिक पीरियड, एफडीआई शेयर मध्य इंक्रीज हेची देख परथियो समस्त। देन इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी strengthened or decreased, yes it is strengthened, yes it is strengthened। कौन लिखिछ वर्षा 2027 रे परीक्षा दबो, सिलेबस कंप्लीट हेपन, ठीक अछि डिस्कस करिया हम से विषय रे, डोंट वरी आज रो क्लास ता जाऊ से विषय पुनी पचारिबो नेक्स्ट क्लास तो रेगुलर क्लास तो करूछ तुम, अटेंडिंग माय क्लासेस डेली 9 pm to 10 ना 9 to 10 क्लास सेठी डिस्कस करिया, डोंट वरी। नमस्कार राजकिशोर। Then industrial activity strengthen, yes industry GVA gross value added grew at 7%, manufacturing growth accelerated, yes GVA up to 7.72% in Q1, 9.13% in Q2 financial year 26, PLI schemes across 14 sectors attracted 2 lakh crore in actual investment, India innovation performance improved, yes innovation performance improved,
Semiconductor mission strengthen the domestic capabilities. को मिशन कहली ना semiconductor mission it strengthen domestic capabilities. 10 semiconductor manufacturing and packaging projects. है ना? And investment and infrastructure strengthening connectivity. तो infrastructure दरकार की दरकार नहीं. Infrastructure growth required or not for proper economic growth. Proper economic growth by infrastructure दरकार की दरकार नहीं. Yes, it is required. बिना infrastructure केमती growth हो? नहीं परिवो कि? No. कौन कहली बिना infrastructure रे growth नहीं परिवो नहीं. So ये कुछ government capital expenditure increased 4.2x. Government रा capital expenditure increased. National highway network expanded by 60%. Rail network increased, reached 69,439 km. India is third largest domestic aviation market. Now देखो ये हमें तो infrastructure economics रे infrastructure class करूचे ये सेटी use होगा कि नहीं infrastructure class ये data whatever data given in this page everything will be used in the infrastructure class. ये सब जाक infrastructure class रे use होगा कि नहीं हाँ होगा कौन हो ये सब जाक infrastructure class रे use होगा install power capacity increased. Install power capacity increased, renewable energy increased, tele density increased, 5G, 99.9% district available 5G. Clean tap water, वर्तमान सुधा जदि हमें देखा 81% rural household they are getting clean tap water. Now कौन scheme अच्छे clean tap water पे किए कोई परिये? वो बहुत थर कोई चे क्लास रे पढ़ी चे. क्लास रे बहुत थर पढ़ी चे. वसुधा scheme मने अच्छी. वसुधा scheme मने अच्छी कि नहीं? कौन स्कीम कहली स्कीम नेम इज वसुधा हैला ओके नाउ स्पेस सेक्टर मध्ये इंडिया रा स्ट्रेंथन हेछि बिकॉज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन कौन पई नो परसेंटेज इंक्रीज ता जोड जति के देछि जल जीवन मिशन इज आल्सो देयर वेरी गुड दिजा जोड देछि 5 वर्ष रे 10 वर्ष रे वर्ष करे tele density not increased tele density availability 99.9% district रे tele density 5G network ता available अछि. Next environment climate change. Now why giving importance to environment and climate change? Because of sustainable development. Because of sustainable development. Now keeping an eye on the future generation. कौन कहली keeping an eye on the future generation that is called sustainable development. देखो 2025-26 डाटा कौन कहउछ ना अप टू 31 डिसेंबर 2025 total 38.61 gigawatt renewable energy capacity has been installed. It includes 30.16 gigawatt of solar power, 4.47 gigawatt of wind power, 0.03 gigawatt of bio power, 3.24 hydro power. Now you can see renewable energy को we are giving importance. मते को renewable energy को importance देले हमें benefit कौन पाइबा? Renewable energy को जदि हमें importance दोचे ताले कौन benefit पाइबा? काहे की दिया जाउचे ठी importance? Importance is given because of कौन पाई दिया जाउचे importance? Importance is given because of renewable energy काहे कि ना because of sustainable development, because of low impact on the environment ऊपर कम impact पड़ियो. Then हमें आसीबा health और education social sector को social sector health and education. Now social sector India one of the largest school system India रे हमको देखिया को मिले केते स्टूडेंट जान छ 24.69 करोड़ तो लिख परियो अप्रोक्सीमेटली 25 कोटी स्टूडेंट 14.61 लाख स्कूल 1 करोड़ टीचर्स देखो डाटा यूज करि परियो एजुकेशन लिखिला वाली डाटा को यूज करि परियो कि नहीं यस वी कैन यूज करि परियो नहीं now school enrollment improved through infrastructure and teacher capacity enhancement कौन कौन स्कीम ना पोषण शक्ति निर्माण समग्र शिक्षा अभियान
देखो पोषण शक्ति इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन और इराडिकेट्स मालन्यूट्रिशन हंगर अनएम्प्लॉयमेंट जो पई जोटा क्रिएट होची हैला now what is the gross enrollment ratio what is the gross enrollment ratio primary रे 90.9 upper primary 90.3 secondary 78.7 higher secondary 58.4 higher education institutions increased from 51,531 to 70,018 so expanding university college and premier higher education institutions जदि हम प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिया रे देखिबा 23 आईआईटी 21 आईआईएम 20 एम्स 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस 2 दीटा इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस अछि जानि छै कि नहीं अबू धाबी और जांजिबर दीटा इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस जांजिबर एवं अबू धाबी जानि छै कि नहीं so now you can see how the India's education sector is expanding NEP reform implemented 170 universities they adopted national credit framework 2660 institutions linked to academic bank of credit with 4.6 crore ID flexible entry exit pathway 153 university re asigala ito 153 university next is health sector ये गला education sector ऊपर discuss कले next is health sector India reduced maternal mortality rate by 86%. केवे इट देखो पोतर गिरी जा जो पॉइंट केवे ना from 1990 since 1990 India reduced MMR by 86%. So global average is 48%. Global average is 48%, but India reduced 86%. Under 5 mortality rate declined 78%. Global reduction only 61. Neonatal mortality rate fell 70% compared to 50% globally. Infant mortality rate dropped from 40 to 25%. Sorry, 40 to 25 per thousand live birth. Very important data. IMR, देखो समझते IMR very important data. Dropped from 40 to 25 per thousand live birth. बुझी कि नहीं health sector. Next आसवा employment and skill development sector. Next कौन कल next is employment and skill development sector देखिए और समझते कहते 56.2 crore people 15 plus they were employed in Q2 financial year 26 around 80.7 lakh new jobs they created compared to Q1 financial year 26 annual survey of industries they show organized manufacturing employment goes to 6% labor code जोटा gig और platform workers accept करनी है now gig workers एवं platform worker एवं किए जोड़ा को ओला उबर स्विगी जोमाटो रे काम करछन से माने gig workers और platform workers को जाउछ तांको तांको पई लेबर कोड बर्तन एक्सपांड होउछ तांको जाउछ कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर कोन कहूची ना कहूची सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया कहूची सोशल सिक्योरिटी फॉर देम बुझिला ई श्रम पोर्टल as of January 2026 e-Shram portal registered over 31 crore unorganized workers women constituting over 54% registrants national carrier service 59 million job seekers 53 million job provider तांको कनेक्ट करछ का कनेक्ट करछि ना जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर तांको कनेक्ट करछ जॉब सीकर जाको जॉब दरकार एवं जे जॉब प्रोवाइड करछन बुझिला देन आसीबा हम स्किल इकोसिस्टम देन आसीबा कोठी कि ना स्किल इकोसिस्टम कोन हो जोटी नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई नेशनल स्कीम कोन कहली फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई इट प्रपोजेस टू अपग्रेड 1000 गवर्नमेंट आईटीआई इंक्लूडिंग 200 हब्स आईटीआई तो आईटीआई बढ़ले कोन लाभ रे आईटीआई स्कूल बा आईटीआई कॉलेज गुडा को इंक्रीज हेले बेनिफिट कोन व्हाट इज द बेनिफिट इफ आईटीआई कॉलेजेस इंक्रीज स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज हो स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिवो कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिवो कि नहीं यस अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिवो कौन हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिवो कि नहीं स्किल डेवलपमेंट कथा मते को आईटीआई कॉलेज बढ़िले कौन हो यस नेक्स्ट देखिए हमें रूरल डेवलपमेंट
and social progress. So rural development and social progress from participation to partnership. From participation to partnership. Now poverty line जदि हमें देखिए World Bank raised poverty line from USD 2.15 dollar to USD 3 per day. 2021 प्राइस अनुसार एडजस्ट होइके केते गला $3 पर डे पूर्व जोटा $2.15 थिला. देन रिवाइज्ड आईपीएल अनुसार इंडिया रा पॉवर्टी रेट केते 2022-23 डाटा कहूची 5.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी, 23% फॉर लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी. सोशल एक्सपेंडिचर जदि हमें देखिया राइजिंग 7% ऑफ जीडीपी, 7% ऑफ जीडीपी. अब 25-26 रे 7.9% ऑफ जीडीपी केते 7.9% ऑफ जीडीपी. देन रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी डिसेंबर 2025 सुधा जदि हम देखिया ड्रोन सर्वे अंडर स्वामित्व कंप्लीटेड 3.28, property card prepared 2.76 crore property card prepared for 1.82 lakh village. हैला ये वाला रूरल डेवलपमेंट. नाउ वे फॉरवर्ड इवोल्यूशन ऑफ द एआई इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम एंड इकोनॉमी. एआई रो इंपैक्ट अछि कि ना इकोनॉमी ऊपर. यस. नाउ सेक्टर स्पेसिफिक बहुत गुटे सेक्टर ग्रो करछि एआई पई, बुझियो कि नहीं. एआई पई कोन होछि बहुत गुटे सेक्टर ग्रो करछि, सेक्टरल ग्रोथ इज देयर. कोन कहली फॉर एआई सेक्टरल ग्रोथ इज देयर. बुझिला. देयर आर सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, अर्बन मैनेजमेंट, एजुकेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नो एआई रो यूज एटी बहुत अधिक होउछि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक यूज होउछि कि नहीं. नो मते को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो यूज इन गवर्नेंस, इन एडमिनिस्ट्रेशन. एआई रो यूज इन गवर्नेंस, इन एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंग टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. मन कर जोटा ट्रैफिक पुलिस चेक करथिला पूर्व हेलमेट चेकिंग, एबे एआई करि परिबो सेटा. एआई एनेबल्ड कैमरास से माने करि परिबो. रूटीन टास्क गुडा को एआई करि परिबो, कैन बी डन बाय रूटीन टास्क, कैन बी डन बाय एआई हे परिबो. देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक indispensability. स्वदेशी, स्वदेशी इज अ डिसिप्लिन स्ट्रेटजी. नाउ हमें आनी चाहिए कोन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. नो इंपोर्ट जहां हमें अननेसेसरी इंपोर्ट आसुची फॉरेन कंट्री रो आनु चाहिए इंपोर्ट, ए कुछ रिड्यूस इंपोर्ट. हमें स्वावलंबी हबा, निज ऊपर निजे डिपेंड करिया जेन स्वदेशी मूवमेंट आस्तिला. बुझिला. सेम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी विथ हाई स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी, इकोनॉमिकली फिजिबल कैपेबिलिटी विथ स्ट्रेटेजिक पे ऑफ. बुझिला. सो ये कौन कहूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कले हमको बेनिफिट कौन, जोटा हम अननेसेसरली इंपोर्ट करूचे फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, ये टू रिड्यूस दैट इंपोर्ट. कौन कहूँ ना टू रिड्यूस दैट इंपोर्ट. से इंपोर्ट रिड्यूस करियो कहूँ. इंपोर्ट रिड्यूस कले बेनिफिट कौन, हमें स्वावलंबी हवा, इंडिया रे प्रोडक्शन हवा. हां कि नहीं. कोटी हो इंडिया रे प्रोडक्शन हो, मोर प्रोडक्शन इन इंडिया, मोर प्रोडक्शन इन इंडिया. देखो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड. देखो टोटल जीवीए, एग्रीकल्चर जीवीए, इंडस्ट्री जीवीए, सर्विस जीवीए, एटा कहितली आउतर देखौ छै. एटा सेम डाटा इ डाटा नै छै एवरेज फाइनेंशियल ईयर 2016 रु 20 पर्यंत एवरेज ता येलो कलर रे देखाइ छी, ब्लू कलर रे फाइनेंशियल ईयर 25 एवं ग्रीन कलर रे फाइनेंशियल ईयर 26 देखो अटवेट सम. टोटल जीवीए फाइनेंशियल ईयर 26 अधिक, एग्रीकल्चर जीवीए कमुची एठी मार्क करि परते सम. एग्रीकल्चर जीवीए इज रिड्यूसिंग. नाउ एठी इंडस्ट्री जीवीए इट इज इंक्रीजिंग. नाउ सर्विस सेक्टर जीवीए इज इंक्रीजिंग, बट डिक्रीज किए कला, डिक्रीज कला इंडस्ट्री डिक्रीज करि गला. सॉरी एग्रीकल्चर डिक्रीज करि गला. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एज पर योर प्रीलिम्स रे टेक्निकली से पचारिबो डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन द सेंस इकोनॉमिक सर्वे डाटा. इकोनॉमिक सर्वे डाटा ऊपर बेस करके से एवला क्वेश्चन एठी पचारि परिबो. बुझी गला. एनी डाउट. नाउ नोट्स, एक्सटेंसिव नोट्स गिवन फॉर यू.
इकोनॉमिक सर्वे कौन ना इट शोज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑलरेडी कहली फिस्कल फाइनेंशियल इंडिकेटर्स so this is it shows the health of the economy it shows health of the economy okay. Now important key points that mention is first advance estimates projects real GDP growth 7.4%, real GVA growth 7.3%, nominal GDP growth 8%, real GDP growth financial year 27 by 6.8 to 7.2%, growth projection by IMF is 7.3%, 27 by 6.4%, World Bank कहला 7.2% and 6.5% for financial year 27. now देख पारथिबे देखो केते इंपोर्टेंट डाटा पूरा ग्रोथ रेट 26-27 रो ग्रोथ रेट एटी दिया है ग्रोथ रेट कहार ना ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 दीटा ईयर पई एटी अछि समस्त देख पारथिबे जीडीपी ग्रोथ रेट दीटा जाक ईयर पई अछि सो इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2028-29 किए कहला आईएमएफ प्रोजेक्शन प्लीज रिमेंबर आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रो कथा कहूचे आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रो कथा कहूचे now 5 trillion economy will achieve by what time we will achieve it by 2028-29 ये projection is given by IMF International Monetary Fund clear now global merchandise export double 1% to 1.8% 2005 to 24 कहिछि already now this is only the highlights of key points whatever I discussed बुझिला whatever I discussed जहा जहा डिस्कस कली कोन कहली जहा जहा डिस्कस कली तार की पॉइंट गुडा को खाली कहूछि जहाँ डिस्कस कली तार की पॉइंट फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज टू $701.4 billion forex reserve increased to $701.4 billion as of January 16, 2026 world largest recipient of remittance India inflows reaching $135.4 billion very important remittance माने foreign currency जो foreign रू transfer money transfer होची इंडिया ना इंडिया होची highest largest recipient सबुठ अधिक मनी ट्रांसफर इंडिया कहूँ थ्रू आउट दि वर्ल्ड बुझी कि नहीं वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट कहि सारिछि मु नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 74 टू 164 74 टा एयरपोर्ट थिला इंडिया रे 2014 रे वर्तमान केतना 164 एयरपोर्ट्स इन 2025 हैला हाई स्पीड कॉरिडोर इंक्रीज नियरली 10 फोल्ड फ्रॉम 550 किलोमीटर टू 5364 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर देख पारथुबे केते इंक्रीज हिच कोन कि हाई स्पीड कॉरिडोर्स इंक्रीजिंग रेलवे लाइन 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन एडेड 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन एडेड रिन्यूएबल एनर्जी रे इंडिया रैंक केते कहल ना थर्ड ग्लोबल रैंक केते ना 3 फोर्थ लार्जेस्ट नेशन टू अचीव ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग स्पेसडेक्स कैपेबिलिटी कोन कहल स्पेसडेक्स कैपेबिलिटी so innovation performance strengthen steadily innovation sector improve course innovation index रो rank केते ना 2025 रे थिला 38 from 2019 रे थिला 66 so innovation index is increasing then PLI production linked incentive scheme 14 sector it attracted over 2 lakh crore actual investment केते 2 lakh crore actual investment कोथरे production linked incentive PLI रे 55.202 crore bank account opened under Pradhanmantri Jan Dhan Yojana JAM Trinity रा कथा समस्त पढ़िथिबे 55 crore bank accounts opened food grain production estimated to have reached 3577 lakh metric ton LMT जोटा हम देखुथिले 3577 lakh metric ton gross enrollment ratio health education को पळे आस जहा जहा कहली तार समरी कहूच whatever we discuss the summary of that now very pinpointed manner it is written in a very pinpointed manner जोटा directly you can put in your answer sheet gross enrollment ratio 90.9 90.3 78.7 primary upper primary and secondary stages बुझियला now 23 IIT 21 IIM 20 AIMS 2 international IIT campus in Zanzibar and Abu Dhabi MPI multinational poverty index which is measured by Niti Aayog it shows decline 2005-6 रे थिला 55% एबे केतना 11% एबे केतना 11% 2022-23 फिस्कल कंसोलिडेशन
deficit came to 4.8% of GDP. 4.8% of fiscal deficit is reducing. So there is a less fiscal deficit reducing means there is a less gap between the government revenue and the government expenditure. Government revenue और expenditure भितर gap टा कमुची. बुझिएला इकोनॉमिक सर्वे बुझिएला ना का को डाउट अछि मते को टिके मु सुने. Is this clear? Clarity आसिला पूरा. Now everything discussed, no points missed. Now you read it, reread it, rewatch the video, make your own notes, download the notes from our Telegram channel, use this material, use these points given here in your answer sheet. Mains answer writing रे आपको use करिए समझते हैं and 100% guarantee दूँ it will make your answer more lucrative and more substantiated. हाँ कि नहीं? ये तुम आंसर को आउरी बेटर करियो. कौन करियो ना ये तुम आंसर को आउरी स्ट्रेंथन करियो, ये तुम आंसर को आउरी बेटर करियो. Is this clear? Or any doubt? Any question, any problem? Utilize करो. इतने भला सुंदर सेशन तो मानक पाई हूँ to utilize it. Utilize these sessions. Mains रे answer लेको mark पाओ तापर जानी पड़ो the difference between you and other candidates. ठीक अछि. Then let's wind up. पुनी काली देखावा 9 ରୁ 10 ଟା. ठीक अछि. शिवांगी, पिहू, गिरिजा, आकाश, वर्षा, पुनी काली क्लास रे आसीबा. रूपश्री, पुनी काली 9 ରୁ 10 ଟା डिस्कस करियो आ कुछ नुवा कांसेप्ट. काली रो कांसेप्ट डिस्कस करबी RBI and credit control method. Reserve Bank of India एवं तार credit control methods in India. ठीक अछि. So that's all for this session. Thank you. Good night. See you in the next class tomorrow at 9 PM.